you are fine. Today we are starting our next class of the kinetic theory of the gases. But yesterday we are discussing about their gamma specific heat ratio for your monoatomic, diatomic, triatomic due to some connection problem. That's why our some topic left of this specific heat for the dia and triatomic. Okay, and then today again we will discuss about this topic. Their specific heat for the diatomic. Okay, we are discussing this one topic. So due to the some connection problem, that's why we have left this topic. CV equal to specific for the diatomic. Now here how we can find their CV equal to the change in our internal energy with respect to temperature. Okay. So kinetic energy per molecule about this one, we know about this one, that is equal to your 1/2 kBT. And for the diatomic degree of freedom क्या होती है हमारी 5 होती है. Degree of freedom yesterday discussed how we can find their degree of freedom. F equal to 3n minus K. Okay, K is restriction, N is a number of the particles, molecules which are lying in our gases. Okay, for the diatomic gases, then our N will be equal to your 2 only. Number of the molecule, for example, oxygen, nitrogen, there are the 2 molecules. So N will be 2 and K will be restriction. They are having restriction or not. तो इसके ऊपर restriction क्या होती है, एक restriction होती है, तो solve करने के बाद हमारा degree of freedom क्या आ जाता है, 5 आ जाता है. उसके बाद kinetic energy for this one your 5/2 kBT, it will be total energy. Then convert this one your Boltzmann constant in form of your gas constant by using this one relation. So after that here U will be internal energy, total internal energy will become here 5/2 R. 5/2 R, then specific heat for the constant volume we can write there CV equal to dQ by du. CP equal to R plus CV. Using this one relation, then CP our came this one, then sorry, CV equal to this one and your CP equal to this one. Using CP and CV, then your specific heat gamma way we can write there CP by CV. Then your after this one 7/2 ratio will be there. Now next for the triatomic specific heat for the triatomic gases, then it will be internal energy per molecule. क्या ये per molecule है, that is equal to your half kBT. So we will find their degree of freedom. तो हमारी triatomic linear के लिए हमारी क्या आ जाएगी, F equal to 7 degree of freedom. तो 7 degree of freedom से multiply कर देंगे तो हमारी internal energy क्या आएगी, 7/2 RT. Okay, differentiation of the internal energy with respect to temperature, then it will give us specific heat at the constant volume. CV will be there, तो हम इसका differentiate कर देंगे T के respect में. T is here temperature, not your time. So T के respect में हम differentiation करेंगे तो CV क्या आ जाएगा हमारे पास 7/2 R. So by using Mayer's formula का use करते हुए CP minus CV equal to R, then CP we can write there R plus R/2 R. So CP we can solve this one, then it will be give us 9/2 R. तो दोनों को हमारे पास क्या आ जाएगा, CP और CV दोनों को यूज करते हैं हम गामा निकालेंगे. इसके अंदर गामा क्या आएगा, गामा इक्वल टू CP by CV. सोल्व दिस वन रेशियो, देन इट विल गिव अस 9/7. दिस इज द गामा फॉर द triatomic gases. For the linear structure will be there. For the non-linear, how we can find, first we will find their degree of freedom. For the non-linear, this type of the structure will be there. One is atom here, one atom is here, one is there, then 3 is a distributing like this one in the non-linear pattern. So we can write there F equal to your 6. Okay, so degree of freedom 6 will be equal to half kBT, then multiply with 6, then it will be left here 3 kBT. Then after this one change kBT into your gas constant by using here relation kB into N equal to your R only, then your internal energy will be here and their CV specific heat using this one relation du by dt. Then we are putting u here, differentiate करेंगे T के respect में. After the differentiation, then our term will be left there 3R. CV हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3R आ जाएगा, CV equal to 3R. Then after this one we will use their Mayer's formula CP minus CV equal to R. तो R से इधर लेके जाएंगे CV को, तो हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या बचेगा, CP बचेगा. So gamma we can write there for non-linear CP by CV. Again we will find their ratio CP equal to 4R, CV equal to 3R. तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो गामा क्या आएगा आपके पास 4R, 4/3 आ जाएगा. तो हमने डिस्कस किया बेटा स्पेसिफिक हीट फॉर द मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेज and your diatomic gases for the different relation. So our relation came here for your monoatomic
then it will become your 5 by 3. For diatomic, then it will be your 7 by 5. For triatomic linear distribution, then it will be your 9 by 7. अगर linear arrangement है, हम atoms का 3 atoms का gases का क्या कर रहे हैं, linear arrangement कर रहे हैं, तो gamma आएगा उसके लिए 9 by 7. For triatomic, non-atomic, then it will be equal to your 4 by 3. I hope you understood, beta. For the general case, if any degree of freedom will be there, here this one monoatomic, dia, tria, इनके अलावा कोई और गैस आते हैं जिसकी degree of freedom any can be given. So general for this one CB we can write there F by 2R. This one is a general formula for the specific heat at the constant volume, F by 2R. F is our degree of freedom. So for the CP, constant pressure, use here Mayer's formula CP minus CB equal to your R. तो यहाँ पे CP क्या यूज करेंगे, R plus CB. तो CB हमारे पास क्या है, F by 2 into R. Put here F by 2 into your R, then here relation will be there for CP. This one F by 2 plus 1. After that, here ratio of the specific heat of the gas, constant pressure and the volume, gamma equal to your CP by CV. इस relation को use करेंगे by using this one relation. So our general formula will become equal to gamma 1 plus 2 by 2. Because here CP क्या आएगा, यहाँ से solve करने के बाद हमारे पास CP आया 1 plus F by 2R. Okay, and CV will be equal to your F by 2R. F by 2R. तो R से R कैंसिल कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, F by 2 F by 2. क्लियर. इसको सोल्व करेंगे बेटे को, तो ये हमारे पास गामा क्या आ जाएगा, 1 plus 2F आएगा. तो ये जर्नल फॉर्मूला है for find out CV, CP and gamma. Gamma is the ratio of your specific heat at the constant pressure and the volume. Okay, so our next topic we will discuss beta, that is your mean free path. Mean free path, that is, what is mean free path? This one your mean of this path traveled by the gas molecules. Okay, for example, then here any box is there, then here gas particle is moving here and there. यहाँ पे क्या है, gas particle है जो क्या कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं. Gas particles are there here, then they are moving here and there. This one strike with this one, then this one strike with this one, then here striking with each other. क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ. Then they are acquiring different path. Acquire different path. इधर से उधर गए तो क्या कर रहे हैं, freely they are moving here and there. After the collision, then this one path is known as the free path, and mean of this one, let here we are taking beta, this one path is your lambda 1, this one path is lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, lambda 6. ओके, यहाँ पे ये पाथ कवर कर रहा है. These gas molecules are having path lambda 5. These gas molecules are colliding with each other and they are moving freely, that is free path. And here different paths are there of the gas molecule. Let here we are taking there, let lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, these are the free path. Free path during collision of gas molecules. Okay, so ये क्या कहता है, mean free path क्या हो जाएगा, average of the free path, then we will call it mean free path. Okay, so here we can write the average distance traveled by a molecule between two successive collision. जो continuously जो और उनके बीच का जो एवरेज पाथ हम निकालेंगे, डिस्टेंस हम निकालेंगे, we will call it free path. At this one we can denote with this one symbol. So here gamma we can write there kT by under root 2 pi nu square p. Here nu is a diameter of the molecule. Diameter जो molecules है, जिसके गैस molecules है, तो इनका diameter हम assume क्या कर रहे हैं, this one your diameter your sigma only, and p is the pressure of the gas exerted by this one. So here this one we can write there kb by t. Then as we will write this one kb t by p. Okay, this one we can write their number of the molecules. So here we can write this one formula 1 by 2 pi nu square n also, this one relation. So after this one here mean free path lambda will be directly proportional to the temperature,
टेम्परेचर की डायरेक्टली। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मीन फ्री पाथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो उनके अंदर क्या will be increase. So inversely proportional to the pressure, pressure के inversely proportional रहेगा. So after this one, if we are taking their different path, lambda 1, lambda 2 of the gas molecules, so here we can write their mean of these paths. We can write here lambda 1 plus here lambda 2, lambda 3 up to your nth will be there, then divide by number of the path taken by the gas molecule. This one will be your mean free path of the gas molecule acquired during any container if we are assuming there. So general formula of this one we can write like this one. So this one our mean path. Here question is there, calculate the mean free path and the collision frequency of the air molecules. ये कह रहा है मीन फ्री पाथ निकालो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस वन. ये हमें गिवन है. डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज गिवन दिस वन, देन एवरेज मॉलिक्यूल स्पीड इज गिवन दिस वन. So first we will write which terms are given in our question, then we have to find out mean free path and collision frequency. आपको क्या given है? First तो number of molecules given है, n given आपको 3 into 10 raised to power 19. उसके बाद क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल. डायमीटर गिवन आपको सिग्मा इक्वल टू 2 into 10 raised to power -8. डी लेटर से भी इसको डिनोट कर देते हैं बेटा, कभी कभी डी लेटर ऑल्सो वी कैन यूज देयर. Average molecular speed of this one here 1 kilometer per second. Average molecular speed given है v equal to our 1 kilometer per second. ये टर्म्स आपको गिवन है. उसके बाद कह रहा है कि फाइंड देयर मीन फ्री पाथ, लैम्डा आपको निकालना है, और कह रहा है फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट. So how we can find these terms? First we will find beta lambda. Lambda how we can write? Beta I told you two relation. अब यहाँ पे आपको दो रिलेशन बताए. One is in form of K B T. Boltzmann constant is K. T is temperature. 2 pi sigma square P. अब हमारे क्वेश्चन में प्रेशर तो गिवन ही, टेम्परेचर भी गिवन ही है, बट नंबर ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स आर गिवन. That's why we can use this one relation for find out their lambda. Okay, so as we are using this one, then here we can write there 1 pi under root 2 pi here sigma square n. Okay, this one is a relation we will use for find out, because number of molecules are given, not your pressure and temperature. So using this one, then we can write their lambda equal to here 1 by under root 2 pi, we can write there 314. Then your sigma square, sigma is this one, and there we can write there 2 into 10 raised to power -18, 8, sorry not 18, this one 8 only, -8 into your sigma square, this one your sigma na square of this one, again 2 into 10 raised to power -8 into your n will be number of molecules here per centimeter cube. So here we can write there 3 into 10 raised to power -19. Solve this one, then lambda we can write there 1 by 4.14, then into 3.14 into 2 to the 4 into 10 raised to our base same power we can add, then we will write there 8, that is your 16, then -16 here plus 19 there, then here will be left their power will be 10 raised to power 3 only. Okay, and into your 3, then more you can solve it 1 by 3, 4, 12.1, round off you can use there 3.1 into 10 raised to power -3. Okay, 10 raised to power 3 को हम ऊपर ले जाएंगे बेटा, it will become your 3, 10 raised to power -3. So solve this one, then our answer will be there, that is mean free path of these gas molecules during the collision. Okay, उसके बाद कह रहा है कि find their collision frequency also. अब फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी पड़ेगी. अब फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास रिलेशन होता है बेटा, राइट दिस वन रिलेशन v इक्वल टू योर, वी नो अबाउट दिस वन योर वेलोसिटी इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट बाय योर टाइम. हमें पता है जर्नल फॉर्मूला यही होता है, डिस्कस्ड ऑलरेडी इन सेकंड यूनिट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम.
Okay, so by using this one relation we can find their frequency formula. यहाँ से frequency का क्या formula आता है? Velocity we can write their v, displacement we can write their lambda. Okay, lambda we will write t. T is your time period. Here we will write, so 1 into time period, then we can write their frequency. So velocity equal to lambda into your frequency. So frequency we can write their velocity by your lambda. Clear? So using this one relation, then we can find their frequency. Velocity is given in our question. यहाँ से हम क्या निकालेंगे? Velocity given हमारे question के अंदर 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है. उसके बाद लैम्डा हम यहाँ से सोल्व करेंगे बेटा, दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे. पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 by लैम्डा. Okay, I hope you understood. You can do this one. That will be your second -1. Put here v and lambda. Lambda को complete solve करना. Then after the solution, then here frequency will be there. So comment your answer beta after calculate this calculation. Now next one, here if three molecules are having the speed u1, u2, u3, then what will be their average speed and RMS speed? तो हमें फाइंड करना, अगर हमारे पास 3 स्पीड्स गिवन है, क्या क्या स्पीड गिवन है? u1, u2 एंड u3, 3 स्पीड गिवन है. ये कह रहा फाइंड देयर एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड के लिए तो हमारे पास क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, जितनी भी आपके पास टर्म्स गिवन है सबको ऐड कर दो एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज. एवरेज निकालने के लिए चाहे एवरेज ऑफ मास निकालना या स्पीड निकालना, एवरेज टाइम निकालना है, सभी टर्म्स को ऐड कर दो और नंबर ऑफ फैक्टर्स टर्म्स से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाता है? एवरेज निकल जाता है. सो यहाँ एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालेंगे? u1 प्लस u2 प्लस योर u3 डिवाइड बाय योर नंबर ऑफ टर्म्स. सोल्व कर दो, हमारे पास क्या निकल जाएगी? एवरेज स्पीड निकल जाएगी. बट क्वेश्चंस में हमें कांस्टेंट ही गिवन टर्म है u1, u2, v3. दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दिस वन. नेक्स्ट योर RMS स्पीड. RMS स्पीड निकालनी, तो RMS के लिए क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर. ओके, रूट निकालना है, मीन निकालना है, स्क्वायर करना है. सो हाउ वी कैन राइट हियर? स्क्वायर ऑफ ईच स्पीड्स u1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, u3 स्क्वायर. मीन ऑफ दिस वन, add all these, divide by number of term, and after that under root, like this one way. Okay, this is the way to find out RMS speed of gas molecules. इस तरीके से हम इनकी RMS वैल्यू निकालेंगे. Now after that next question will be given here. If there is a 3 molecules, our speed are given here, u1 equal to your 3v, u2 given here 4v, and v3 is given here 5v. 3 speeds given है. Calculate their root mean square velocity. Root mean square RMS velocity आपको find करनी है. Using this term, then we have to find out RMS velocities. So how we can find? Again I told you formula beta to find out RMS value. सबका mean निकाल दो, square कर दो, root कर दो, then we will get their RMS. So we will write there under root of this one, then here velocity 1 velocity square, then velocity second, then third velocity. सबका स्क्वायर करके क्या निकाल देंगे? एवरेज निकाल देंगे. here 3 velocities are given, that's why divide by 3. अगर 4 given होता then plus 4th velocity divide by 4. then after this one, then solve here. your 3 velocity is given, your 3v square plus your 4v square plus your 5v square. divide by your number of terms, then here will be your 3 only. तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हियर अंडर रूट हियर v square, then take out from under root, then it will be come out, then here we will get there v only. यहाँ से निकलेगा अंडर रूट से, तो हम v square को क्या पुट कर सकते हैं? v पुट कर सकते हैं, v RMS. क्लियर? इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास v बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस ईयर 5 5 25 डिवाइड बाय ईयर 3. तो v as it is, then here will become your 25 and your 35 36 plus your 9 5 4 45 by 3. So here we can cancel this one, then here left v under root 1 5 v RMS. So this one left here. Answer of this one question, like this one we can find their RMS velocity of their gas molecules. Now
Next one, your last one topic left beta, Brownian motion. What is Brownian motion? Brownian motion beta, randomly gas particles are moving here and there. This zigzag type of the motion is known as the Brownian motion. कि जो गैस पार्टिकल्स है जो इधर उधर घूम रहे, these are the gas particles moving here and there, moving here and there. This one type of motion is known as your Brownian motion. एक बार इधर जा रहे, एक बार इधर जा रहे. तो ये जो मोशन है ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर पे. टेम्परेचर इट विल बी इंक्रीज, दिस मोशन विल बी इंक्रीज एज टेम्परेचर विल बी इंक्रीज. Okay, but as this one, these gas molecules, these particles will be of the viscous medium, then Brownian motion will be decreased there. Okay, so we will read this one. The continuous random motion of the particles microscopic size suspended in air or any liquid is called as the Brownian motion. Okay, you can say zigzag path. Brownian motion, continuous zigzag path, Brownian motion of this microscopic size suspended in air. हमारी एयर के अंदर बेटा एयर पार्टिकल और लिक्विड के जो मोलिक्यूल सस्पेंड कर रखे हैं तो उनके बीच में जो रैंडम मोशन है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं. सो ब्राउनियन मोशन सस्पेंडेड इन बोथ ऑब्जर्व मैनी लिक्विड एंड गैसेस. लिक्विड और गैस दोनों में ऑब्जर्व किया जाता है. सो इट इज ड्यू टू द अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द गैस मोलिक सराउंडिंग our us. So this one motion, this Brownian motion will increase. Brownian motion will increase. कब increase करता है? If first one, temperature will increase. Temperature will increase. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ब्राउनियन मोशन क्या करता है? इंक्रीज करता है कि अगर हम ये आपका कंटेनर इसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो इनकी मोमेंटम है जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स की वो क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी. और इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा? ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करता है. टेम्परेचर करने के बाद क्या हो जाता है? एक्टिव मोड में हो जाएंगे. सो दे आर मोशन मूविंग हियर एंड देयर. सेकंड, विस्कोसिटी पे. किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी पे. विस्कोसिटी क्या होती है बेटा? दैट इज योर विस्कस मीडियम. विस्कस मीन्स गाढ़ा. यू कैन से कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं हनी और लिक्विड को तो हनी इज अ मोर विस्कस एज कंपेयर टू दी लिक्विड वाटर. ओके, कि अगर एक साइड हनी रख रहे, शहद रख रहे, एक साइड पानी रख रहे तो ये कह रहे हैं कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? तो जो ज्यादा गाढ़ा होता है उसको क्या कहते हैं? ज्यादा विस्कोसिटी उसकी. तो विस्कस का मीनिंग ही क्या होता है? गाढ़ापन. तो दैट विल बी मूविंग लेस इन मोशन, दैट इट विल बी मोर विस्कस एज कंपेयर टू दिस वन. सो हनी इज अ मोर विस्कस एज कंपेयर टू दी लिक्विड. तो ये वही कह रहा है जिसकी आपकी विस्कोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी, उसका ब्राउनियन मोशन क्या रहेगा? इंक्रीज कर देगा. अगर यहाँ पे विस्कोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो मोशन क्या होंगे? फ्रीली ज्यादा मूव करेंगे, मोशन इंक्रीज करेगा. सो विस्कोसिटी विल डिक्रीज, सो ब्राउनियन मोशन विल बी इंक्रीज देयर. तो विस्कोसिटी पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट ईयर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी अगर आपकी डिक्रीज करेगी तो ब्राउनियन मोशन क्या करता है? इंक्रीज करता है. डेंसिटी पे भी क्या है? डेंसिटी विल डिक्रीज. डेंसिटी डिक्रीज करती है तो आपका फिर भी क्या रहेगा? ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करेगा. और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स का साइज अगर ज्यादा होगा तो क्या है? ब्राउनियन मोशन क्या करेगा? डिक्रीज करता है. अगर साइज छोटे छोटे गैस पार्टिकल्स है, छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल्स है तो ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करता है. अगर छोटे साइज अगर ज्यादा है तो आपका ब्राउनियन मोशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो फोर्थ फैक्टर क्या है जिसपे डिपेंड करेगा? फोर्थ फैक्टर साइज ऑफ मॉलिक्यूल. साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसपे क्या है? डिपेंड करता है. साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज. साइज ऑफ मॉलिक्यूल विल स्मॉल कह सकते हैं हम. इट विल बी स्मॉल होगा. इट विल बी स्मॉल, देन ब्राउनियन मोशन विल बी इंक्रीज. सो these are the different factor then on which Brownian motion will be depend upon this one कि कब इंक्रीज करता है? जब ये फैक्टर्स इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तब ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करता है. Clear? I hope you understood beta. This one unit is completed today. So in next class we will discuss our next unit.
Then thank you for watching today our video.